Hello friends, myself Vipul Patel. Our first topic is electric flux. Electric flux is a quantity proportional to the number of electric field lines passing through the surface. एक सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो क्वांटिटी कितनी है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करता है. Here consider a surface of area A placed in a uniform electric field. हमें यहाँ पे एज्यूम करना है कि एक सरफेस जो है उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा है. सरफेस A इज परपेंडिकुलर टू E. E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. यहाँ पे जैसे आप फिगर में देख सकते हो कि E जो है सरफेस जो है इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में रखा है. A is a vector quantity and its direction is outward to the normal area. Here, area A and E is in the same direction. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो एरिया A and E की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है. Therefore, electric flux phi that is equal to EA. If the surface under the consideration is not perpendicular to the field, then the number of line passing through it must be less. अगर सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है, जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हो कि जो सरफेस है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, ये थीटा एंगल पे है. सो उसके एक्रॉस से जो ये इलेक्ट्रिक लाइन जो पास हो रही है जाहिर है वो इस वाले केस में कम होगी. If the surface area make an angle theta with the direction of E, then to determine electric flux link with surface, we have to consider A cos theta component of parallel, or you can take as antiparallel to the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स फाइंड करवा माटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमें कंपोनेंट लेना है A cos theta. That is a parallel component. Anti-parallel component भी ले सकते हैं. So electric flux phi equal to EA cos theta. Now, if the surface is parallel to the electric field, now another case, दूसरा केस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस जो है उसके पैरेलल में है, जैसे कि आप देख सकते हो. So at that time the flux linked with the surface will be phi equal to EA cos 90 degree. cos 90 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो A की लाइन एंड E की लाइन एग्जैक्टली 90 डिग्री पे है. That's why the electric flux is EA cos 90 and that is becomes 0 because cos 90 equal to 0. And here note down electric flux is a scalar quantity. Now, for summarize, when an electric field passing through the surface, then the flux becomes 0. And when the electric field that is outward to the surface, then the flux is positive. When the electric field line is inward to the surface, then the flux becomes negative. Our next topic is potential and potential difference. In that, electrostatic potential. As we know that the work done by electric field by moving a unit positive charge from one point to another in electric field depend only on the position of those 2 points and not on the path joining them. अगर हमें जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करना है तो जो वर्क डन होगा वो डिपेंड करेगा वो 2 पॉइंट के, नहीं कि वो दोनों पॉइंट को जो जॉइन जिस पाथ से हम जॉइन करते हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन उस दोनों पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड करेगा.
If we take a reference point A and take the positive charge from A to B, A to C and A to D in electric field, एज यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए जो है उसको हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है एंड एक बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट पे है। हमें पॉजिटिव चार्ज को ए से बी पॉइंट लेके जाना है, ए से सी पॉइंट लेके जाना है, ए से डी पॉइंट लेके जाना है। उस टाइम पे जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा दैट उसको अगर इक्वेशन में हम डिफाइन करें, दैट इज अगर ए टू बी लेके जाना है, सो वर्क डन दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी E, that is electric field, and dr, that is the distance. Same way for A to C, WAC equal to integration of A to C E into dr. Same way for A to D, integration of A to D E into dr. Here reference point A is fixed, so above mentioned work only depend on the position of other point like B, C, D. Conventionally, the reference point taken as point at infinite distance from the source of electric field. So, work done for that W infinite P, that is infinite to P E into dr. But if we want to determine the work done against electric field, this equation can be written as W dash infinite P equal to minus. Here the minus sign that defines the work done is against the electric field limit of infinite to P E into dr. An important characteristic of an electric field is called electrostatic potential, and with the reference to work done and unit positive charge, it is defined as under work required to done against the electric field is bringing a unit positive charge from infinite distance to given point in the electric field is called electrostatic potential at that point. According to above definition, electric potential at point P is given by Vp equal to minus, that is for work done against the electric field, limit of infinite to P E into dr. From the previous formula, the potential difference between Q and P can be written as Vq minus Vp, that is Q infinite to Q point, that is minus because work against the electric field E into dr minus this is for P, that is also having minus sign. So this minus minus become plus, and this minus, this infinite to Q limit is transferred to Q to infinite, that is become positive. So this Q to infinite and infinite to P, that can be written as Q to P limit E into dr. So if you want to write P to Q rather than Q to P, then this plus sign is become negative. So you can write P to Q E into dr. This potential difference shows the work done required to be done to take a unit charge from P to Q against the electric field. The unit of potential difference is joule per coulomb, which is called volt in memory of scientist Volta. Volt equal to joule per coulomb, and this volt is a scalar quantity. Our next topic is electric potential due to the point charge. We want to find Vp due to point charge Q at some point P at distance r from it. So, as per this graph, you can see यहाँ पे एक x एक्सिस है, y एक्सिस पे है, और यहाँ पे ओरिजिन पे 0 पे Q एक पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट है P, और यहाँ पे इंडिकेट किया है इनफाइनाइट डिस्टेंस, और ये जो P पॉइंट है उसका Q से कितना डिस्टेंस है R. As per the definition, Vp
potential, that is Vp, is equal to minus, that is work done against the electric field, that is infinite to P E into dr, because you can see this infinite, the work done, this infinite to P is against the electric field. We can also write this equation in another form, that is Vp equal to infinite to P, that is transferred to P to infinite, so this minus sign becomes positive sign, and that is E into dr. At this point P, E, that is electric field, can be written as kq upon r square into r vector. So Vp यहाँ पे ये इक्वेशन में हमें E इक्वल टू ये वैल्यू रखना है, जिससे इक्वेशन बनेगा Vp इक्वल टू P टू इनफाइनाइट के क्यू अपन आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू आर. सो इक्वल टू R टू इनफाइनाइट के क्यू अपन आर स्क्वायर. इक्वेशन को नॉर्मलाइज करेंगे, सो फाइनली वी कैन गेट दिस स्टेप. अगेन वी कैन दिस लिमिट को रखेंगे, we can get this step. After that, finally we get this Vp equal to kq upon r, where k equal to 4 pi epsilon 0. This equation is true for any charge, either it is positive or it is negative. Potential at a point due to number of charges. The absolute potential at a point due to number of charges is equal to the algebraic sum of the potential due to the charges. अगर नंबर ऑफ चार्जेस पे फाइंड करना है तो जितने भी चार्जेस का पोटेंशियल जो भी फाइंड किया है उसको समेशन करना पड़ेगा. यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा है दैट इज फॉर अ सिंगल चार्ज Q1, सेम वे Q2, Q3, Q4 ये सब फाइंड कर सकते हो, और उसका जो अलजेब्रिक सम होगा दैट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस. Thank you for watching this video.